Namaste. I welcome you all in our today's discussion on multiple choice questions, 2 marks questions, and case studies pertaining to our subject ABM. तो आज के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज मेक द यूज ऑफ कमेंट बॉक्स so that we can resolve your query immediately. So let us start for our first question now. So the first question is a random sample of 120 employees is taken from a corporation to assess the proportion who prefer online training program. पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, then we will discuss it. 57 employees express a preference for online program. Construct, क्या करना है हमें? Construct a 99% confidence interval for the population proportion. What question is saying? कि 120 एम्प्लॉयज का उन्होंने रैंडम सैंपल रैंडम चेकिंग कर दिया. फॉर व्हाट पर्पस? इज टेकन फ्रॉम ए कॉरपोरेशन. कंपनी के 100 एम्प्लॉयज को उन्होंने सिलेक्ट कर दिया और उनको ये पूछा कि उनमें से कितने लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिफर करेंगे. तो 120 में से 57 एम्प्लॉयज एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम. तो 120 में से 57 एम्प्लॉयज ने ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए प्रेफरेंस दे दिया. सो कंस्ट्रक्ट ए 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. तो ये जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसका 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें कंस्ट्रक्ट करना है. तो जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा पहले आई हैव टू फाइंड आउट द व्हाट आर द अजम्पशंस फॉर दैट. सबसे पहले व्हाट इज द सैंपल साइज ऑफ एम्प्लॉयज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर 120. that is nothing but the sample size of total employees which is known as which we can call it as a L. So 120 employees में से कितने लोगों ने हाँ कह दिया फॉर गोइंग फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो व्हाट इज द सैंपल प्रोपोर्शन. 120 में से 57 लोगों ने हाँ कह दिया. तो 57 लोग जो है दे आर सैंपल प्रोपोर्शन विच वी कैन कॉल इट एज अ पी बार. पी बार कितने हैं? आउट ऑफ 120 57 एम्प्लॉयज हैज शोन देयर प्रेफरेंस फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम. इट मीन्स 0.475 टाइम्स लोग जो है और 47.5% लोगों ने या एम्प्लॉयज ने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए प्रेफरेंस दे दिया. सो नाउ नेक्स्ट इज अगर 47.47 एम्प्लॉयज ने अगर हाँ कह दिया तो ना कितने लोगों ने कह दिया? 1 माइनस 0.475 दैट इज 0.525. that is nothing but the Q represents. What is this Q? Q represents complement of sample proportion. So Q is equal to 1 minus P. So Q bar is equal to 1 minus P bar. So what is the P bar? P bar is here at 0.475. So 1 minus 0.475. So Q bar will be 0.525. Now we have to confidence. What they have asked is interval for population proportion. जिसके लिए पहले हमें चाहिए we should know what is the standard error. Standard error कितनी है ये हमें ढूंढना पड़ेगा. Then what is the formula for standard error? Formula for standard error is square root of P bar into P bar into Q bar divided by n. That is the formula. So what is your P bar? P bar is 0.475 into Q bar. What is Q bar? It is 0.525 divided by 120.
So if you do this calculation, 0.475 into 0.525 divided by 120, if you do this calculation, this will be 0.00272078. But this is in square root. So what is the square root of 0.002078? The square root of is the square root of 002078 is 0.0456. Or in another way, I can say that the square of 0.0456 is 0.002078. If you wish, you can check the calculation. So we got the standard error also. For standard error, it is denoted by AC. Being first question, we will discuss it in detail. So standard error, it is denoted by SE. Now Z score is at 99% level. Z score at 99% taken from the table. What is the standard number? It is 2.58%. Now we have to construct a confidence interval. So how is the confidence interval? Means slab, lower slab and upper slab. So lower confidence level or lower confidence interval is equal to sample proportion जो है P bar for lower it is P bar minus Z into standard error. So what is my P bar? 0.475. For lower level it is minus. For upper layer, upper confidence interval calculation, it is plus. So in one case, for lower case, 0.475 minus 1177. How 1177 has come? It is nothing but the 2.58 into 0.0456. So it comes to 0.357. And upper level, because here you have to add it, it comes to 0.59. It means we are 99% confident that true proportion of all students and in the population, not just this sample, अगर overall अगर हम रेशो निकालना चाहते हैं तो we can say that who prefer online learning lies between 35.7% to 59%. It means 35.7% to 59% के रेंज में के एम्प्लॉइज नॉर्मली ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिफर करते हैं. So from this question point of view, our correct answer is 0.3. What is our correct answer? 0.357. That is nearest is 0.358 and 0.59 is 0.593. So D is the correct answer for our question. जो फॉर्मूलाज हम प्रिस्क्राइब करते जाते हैं, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट. जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, प्लीज ट्राई टू यू रिमेंबर दिस बिकॉज दैट विल हेल्प यू, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर एग्जामिनेशन. नाउ लेट अस गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Now second is case study regarding check clearances over business day. इसमें उन्होंने हमें 8 दिन का डाटा दिया हुआ है. पर डे हाउ मेनी चेक्स दे हैव क्लियर. एक पहले दिन 131, दूसरे दिन 124, 115, 142, 118, 125, 137 है 129 दिन. सो 8 दिन में कितने चेक क्लियर किए उन्होंने डे वाइज डाटा दिया. नाउ हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? कैलकुलेट सैंपल मीन, उनका मीन निकालना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. तो सैंपल साइज कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So total sample size is 8 because 8 days data has been given. So what is the formula for SD? Standard deviation. Now we have to calculate the standard deviation. Formula for standard deviation is equal to 1 upon n minus 1 summation of xi minus x bar square. So for this, how will we calculate?
So for this, we have to take the help of this table. See, X is the original data. That is all 8 days data they have given. 131, 124, 115 and up to 129. The sum of this total is 1021. So this is the sum of the X. Now, how they have calculated X? So, firstly, before that, we have to calculate the sample mean. What is the sample mean? For 8 number of days, 1021 checks have been cleared. How many days, how many checks are cleared on an average basis per day? So, what is the average? Average is 127.63. That is nothing but the mean, sample mean. That is the mean of the samples given to us or average that has been given to us. Now, how will we calculate the x minus x bar? So when this is the mean, so on first day we have cleared 131 days. It means on the first day we work better than that of the average means. So कितना हमने अच्छा काम किया? 131 minus 127.63, that is 3.37. आप कैलकुलेट करके देख लीजिए. So x bar is equal to nothing but the means of 8 day check clearance, that is 127.63. So when it is 131, our means is plus, it is in plus. When it is 124, on the second day, how many checks we have cleared? We have cleared 124 checks. Whereas against our means is 127 against our average of 127.63. It means on that day we have processed or we have cleared 124 minus 127.63 is equal to minus 3.63 checks have been cleared by us. In the same way, on the third day, we have cleared minus negative. It means because we have worked less than that of our average. So likewise, for all the 8 days, we have calculated what will be the x minus x bar. In this formula, we need x minus x bar. So how will we calculate x minus x bar square? So what is the square of 3.37? Square of 3.37 is equal to 11.35. Please hold a line. The square of all the details, whether it is minus or plus, square always comes in a positive number. So this is nothing but the square of x minus x square. For second day, x minus x square is 13.17, so and so forth. So on the last day, square of 1.37 is 1.88. So if you take the total of all this, if you take the sum of all these things, which comes to 579.92. So what is the sum total of variances? 179.92 divided by 7. So it comes because why? Now how the calculation will be done? What is the sum total of this? 579.92. Now we are coming to the formula at standard deviation. 1 divided by n minus 1. What is n? N is the number of days. So how many number of days are there? 8 days are there. So 1 divided by n minus 1, that is 7, into sum of x1 minus x2 square, which is nothing but the 579.92. So 579.92 divided by 7 is equal to 82.84. So this is in square root. So what is this when it is lying in square root of 82.84? How much it is? Square root of 82.84 is 9.10. So what is the standard deviation? 9.10 is our standard deviation.
So what is the answer? Means for this question is 127.63 and standard deviation for this question is 9.10. Next question. सॉफ्टवेयर पैच डिप्लॉयमेंट टाइम, अगर सॉफ्टवेयर में जब पैच लगाना रहता है तो उसको कितना टाइम लगता है? ए टेक कंपनी रिकॉर्ड्स द डिप्लॉयमेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पैचेस. जब सॉफ्टवेयर में पैचेस लगाए जाते हैं, कोई एक कंपनी ने उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया. The known population standard means general standard deviation. The known population standard deviation is 3.4 minutes. General कितना है? Overall standard deviation कितना है? 3.4 minutes. लेकिन जब उन्होंने 49 डिप्लॉयमेंट्स का जब ए रैंडम सैंपल ऑफ 49 डिप्लॉयमेंट्स, लेकिन उन्होंने जब 49 एंट्रीज का सैंपल उठा लिया रैंडम बेसिस पे, तब उनका मीन टाइम कितना आ गया? 26.7 मिनट्स. कितना मीन टाइम आ गया? 26.7 मिनट्स. इट मीन्स एवरेज टाइम इज 26.7 मिनट. व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन? तो ये जो मीन हमारा आया है उसका स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? एंड एस्टिमेट द इंटरवल यूजिंग वन स्टैंडर्ड एरर. तो एक वन स्टैंडर्ड एरर मीन्स एक स्टैंडर्ड एरर यूज करके हमें एस्टिमेट द इसका इंटरवल कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग विच दिस विल हैपन. सो these are the answers that they have given. Now we have to select one among them. Now let us go for that. तो अभी तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. पैच डेवलपमेंट टाइम हमें फाइंड आउट करना है, उसका मीन्स कितना है एंड उसका स्टैंडर्ड, उसका उस उनके इन दैट केस व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन एंड व्हाट इज द इंटरवल. ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले we will go for standard error. How shall we calculate the standard error now? Standard error is equal to sigma divided by square root of n. So what is the sigma here? What is the meaning of this? It is nothing but the standard deviation. So sigma is nothing but the standard deviation. So what is the population standard deviation here? It is 3.4 divided by square root of 49 deployment. Sample कितना है? What is n here? N is 49. So standard error is equal to 3.4 divided by square root of 49. What is the square root of 49? We all are aware that it is nothing but the 7, because 7 square is 49. It means 49 square root of 49 is 7. So 3.4 divided by 7 is equal to 0.4857. अगर हम दो डिजिट में लेना चाहते हैं तो this will be 0.49. So what is the standard error of mean? 0.49 is my correct answer. Now we have to go for interval using one standard error. So what is my standard error? What is my standard error? That is, what is my mean time? It is 26.7 plus or minus standard error, that is 0.49. So for lower, I already told you that this is to be deducted. For upper level, this is to be added. So lower level 26.7 minus 0.49, which comes to 26.21, and for upper layer 26.7 plus 0.49, that is 27.19. So what will be my answer? Standard deviation or standard error of the mean is 0.49, and an interval using one standard error, that is interval using the standard error of 26.7, it comes to 26.21 and 27.19. So A is the correct answer for our question. Once you know the formula, you can solve it comfortably, you can solve it easily. इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है. You should have good practice for good number of questions. So now let us go for the next question.
ऑफिस एयर क्वालिटी CO2 लेवल के ऊपर एक केस स्टडी दिया हुआ है हमें। जब उन्होंने 64 आवर्स का मॉनिटरिंग किया, फ्रॉम 64 आवर्स ऑफ मॉनिटरिंग एवरेज CO2 इज 413 ppm। क्या हुआ? जब उन्होंने 64 घंटे का 64 आवर्स का मॉनिटरिंग किया तो उसमें उनको एवरेज CO2 413 ppm फाइंड आउट हो गया। दैट इज द लेवल हाउ वी कैलकुलेट द CO2। So what is the population variance? Overpopulation variance कितना है? 25 ppm square. And what is the sigma? It is 25 square root of, that is sigma is 25, so it is nothing but the 5. Now अभी हमें क्या count करना है? What we have to calculate? Sigma means standard deviation. So what is the standard deviation? 5 है. So what we have to calculate? Interval A at 70% confidence पे कितना होगा? 70% confidence में then confidence level is 1.04, Z is equal to 1.04. We have to calculate the confidence level. And interval B कितना होगा? Second other calculation, 96.3% confidence level पे when Z is equal to 2.15, what will be your answer? So सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर? फर्स्टली व्हाट इज द पॉपुलेशन वेरिएंस हियर? इट इज 5। सो 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स कितने काउंट किए डिवाइडेड बाय n। सो 64 hours will be our n because total number of hours they have monitored is 64. So 5 divided by square root of 64 is equal to 0.625. That will be the answer for this. Now what is my interval level? Interval at 70% level, my Z is equal to 1.0. So what is the margin of error? Margin of error हमें count करना पड़ेगा. So margin of error is equal to Z. Margin of error is equal to Z, that is the confidence level, into standard error. So how it is coming? 1.04 into 0.625, that is 0.65 will be my margin of error when interval A at 70. And confidence level at in 96.35% level, how will it come? It is on the basis of confidence interval is equal to, how will we calculate? जो हमने already आपको बता दिया है, 413, that is the average mean plus or minus the margin of error, that is 413 plus or minus 60.65. It is either on the upper level it is 413.65 and on the lower level 413 minus 0.65, that is 412.35. So 412.35 and 413.65. So C for A, C is the correct answer. Now we'll go for the another level confidence. It is 2.15. So how will you calculate margin of error here? As usual, Z into, it will remain the same. 0.625 will remain the same. What is 0.625? It is the standard error. So margin of error is equal to confidence level into standard error. That is 2.15 into 0.65 is equal to 1.34375. Now what we have to do? Again we have to do plus and minus here to find out the interval. So what is the average? What is the mean? Mean is 413. This is common for both the cases. So mean is 413 plus minus. What is my standard error in this case? 1.34375. So 413 plus minus 1.34375 is equal to, when I'm taking it to the two digits, it is 411.66 and 414.34.
So 411.66 and 4114.34 is correct answer for B. So C is the correct answer for our question. Now let us go for next question. Here we have to see the surgical complication rate at 98.1% confidence. Again, it is very important for you. So in an audit of 250 surgeries, पहले हम पढ़ लेंगे, then we will try to understand the question. In an audit of 250 surgeries, 16 had recorded applications. Estimate 98.1% confidence interval for the true proportion of complications. सो 250 सर्जरीज का उन्होंने जब ऑडिट किया, उसमें उनको ये फाइंड आउट हुआ कि आउट ऑफ 250 16 सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशंस रिकॉर्ड हो गई थी. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें 98.1% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए एज यूजुअल व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करने के पहले हमें सैंपल प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा. हाउ मच इज द सैंपल प्रोपोर्शन? 250 में से 16. सो हाउ विल यू कैलकुलेट? दिस इज कॉल्ड एज अ पी हैट. सो व्हाट इज द पी हैट हियर? 250 में से 16, सो कितना परसेंटेज हो गया? 16 divided by 250 is equal to 0.064. It means 0.064 लोगों ने 0.064 ऑपरेशंस में, सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशंस फाइंड आउट हो गए. अगर हम परसेंटेज वाइज निकालना चाहते हो तो 16 डिवाइडेड बाय 250 into 100, इट मीन्स 6.4% सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशन फाइंड आउट हो गए. नाउ वंस वी नो द सैंपल प्रोपोर्शन, नाउ we have to calculate the standard error. How will we calculate? P hat into 1 minus P hat, that is Q. So P hat minus 1 minus P hat divided by N. Very simple calculation. So what is my P hat or P bar? P hat or P bar is 0.064. How shall I calculate the P bar? 1 minus P bar is equal to Q bar. So or Q hat. So 1 minus 0.064, that is 1.1 minus 0.936 divided by my number of cases N. So number of surgeries are 250. So again I am calculating it, square root of 0.064 into 0.936 divided by 250. So answer comes to 0. So answer comes to 0.064 into 0.936. The answer comes to 0.0599. This is nothing but the multiplication of these two, multiplication of numerator. So numerator has come down to 0.0599 divided by 250. So ultimate answer will be 0.000239. It is nothing but the total calculation of numerator divided by denominator. So this entire thing is coming in, this is completely coming in your square root. Please, otherwise you may get confused here. So here everything is coming in square root. When it is coming in 0.002396, so what is the square root of 2396? 0.0155 will be the square root of 0.002396. So what is the standard error? 0.0155. So now we are able to find, we have Z with us, we have confidence level with us, we have standard error with us. So how shall we calculate the margin of error now? Margin of error is equal to Z into standard error. So what is the Z here? Z for 98.1%, it is 2.36 into standard error is 0.0155.
So what is the answer? If you wish, you can check this calculation. So margin of error in this case will be 0.036. Now how shall I calculate the intervals? I shall calculate the intervals in p hat, that is sample proportion, plus or minus margin of error. So 0.06 minus 0.0366. So that comes to 0.0274, and 0.064 plus 0.0366, it comes to 0.1006. So it is nothing but the, so our answer is 0.274 and 0.1006. So here are you able to find it out here? No, because we are not able to find out the correct answer what we were observing in the previous issues or previous slides. So go to the nearest one. So 0.027, which is the nearest one? 0.43 and 0.85, because C is the nearest one to this. So C is the correct answer for our question. Now next question. What is the missing frequency in the class interval of 40 to 45 exclusive? कितनी है missing frequency in the class interval of 40 to 45? So how many numbers are there? So now we will see the calculation. So values between 40 and 45 inclusive, or 45 value in the same class interval. So it includes above and equal to 41, 42, 43, 43, 44 and 45. So how many numbers are there? 6 numbers are there. So 6 is the correct answer. 43 is the median. So what is the frequency? 6 is the correct answer for our question. अब मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया है कि जो स्टूडेंट्स CIB, JIB या प्रमोशनल एग्जाम्स को अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए हम रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स या PDF क्वेश्चन बैंक्स, केस स्टडीज वीडियोस एंड इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. And these facilities are provided at a very low price, and which has been composed or which has been prepared by the professionals and which is of very best quality. अगर आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ विजिट आवर enestur.schoolofbanking.com, जहां आपको डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी. अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ टेक द बेनिफिट ऑफ दिस, so that you will be able to score good mark in the examination. इसी के साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे. जैसे आपको अवगत है, वी आर इन दिस लाइन ऑफ एक्टिविटी और वी आर इन दिस प्रोफेशन फॉर मोर देन 30 years, and every time we are providing different types of guidance to the students who are appearing for such examination. So during the period of last 30 years, more than 10 lakh students who have appeared for these examinations have been benefited out of the material that has been provided to them. So now let us go for our next question. We have to calculate the standard error. What is the case study? Standard error with known standard deviation and sample size. हमें sample size भी मालूम है, standard deviation भी मालूम है, उन्होंने वो भी दे दी है. And in that case, how shall we calculate our standard error? Let us go for next question. A population standard deviation, पूरे population की standard deviation कितनी है? 12. And sample size कितना है? 36. A sample of size 36 is drawn from an infinite population.
सो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम है पॉपुलेशन का सैंपल साइज कितना है n इज इक्वल टू 36. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन. तो ये जो सैंपल मीन है उसका स्टैंडर्ड एरर कितना है. सो हाउ विल वी कैलकुलेट इट. फॉर इन्फिनिट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे. सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन. सिग्मा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन. So what is the standard deviation here? Standard deviation is equal to 12. So in this case our standard deviation is 12. What is the number of n? N is equal to population size. What is the population size? 36. So n is equal to 36. What is my formula for standard error? Standard error is equal to sigma divided by square root of n. Again this formula you have to keep it in mind. So sigma divided by square root of n. I know sigma, I know n, then we can calculate it easily. So 12 divided by square root of 36. So what is the square root of 36? Square root of 36 is equal to 6. So our calculation will be 12 divided by 6 is equal to 2. So 2 is the answer for our question. A is the correct answer for our question. Let us go for next question. Determining sample size for given accuracy. हमें accuracy दे दी है उसके है तो sample size में कितनी accuracy है ये हमें calculate करना. So a population, this word is very important. A population with a standard deviation 25. पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 25. डिटरमाइन द मिनिमम सैंपल साइज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द मीन विद इन 2 and plus and minus 2 units with 95% confidence यूजिंग CLT अप्रोक्सीमेशन. इन्होंने हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है कि आपको CLT अप्रोक्सीमेशन लेवल कंट्रीब्यूशन की यूज करनी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CLT अप्रोक्सीमेशन. CLT का मतलब है सेंट्रल लिमिट थ्योरम. हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करना है. उसके लिए वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम. So at 95% confidence level, what will be Z? Z will be 196. You will get it from the concerned table. So for 95% confidence level, Z is equal to 1.96. लेकिन टारगेट मार्जिन एरर कितना है. Because you are required to estimate the mean within plus or minus 2 units with 95% confidence. So जब 95% confidence है margin of error will be 2 that they have provided us. So what will be the CLT is equal to A. What is the meaning of E? E is equal to error. So what is the meaning of the error? Standard error. It is sigma divided by square root of n into Z. So here we have they have given us E here. What is the E? So E is equal to, so we will rearrange it. So E is equal to sigma divided by n into Z. So what is the number हमें ढूंढना है. We have to go in a reverse direction here. Determine the sample size. हमें sample size कितना लेना है for getting it to that we have to find it out. So n is equal to, so we have to calculate the n here, we have to find out n here. So square root of n is equal to sigma into Z divided by E, because n has gone from here to here and E will come here. So sigma divided by E into Z, or I can say that sigma into Z divided by V. We have rearranged this formula. आप एग्जाम एक बार नोटबुक में लिख के ये प्रैक्टिस कर दीजिए किस तरह से उन्होंने रीअरेंज किया हुआ है. सो व्हाट इज द
what is the sigma here? 25 is my standard deviation. So 25 into what is my 95% confidence level, that is Z. My Z is 1.96 here. So 25 into 1.96 divided by standard error, वो कितना चाहते हैं? It should be plus or minus 2 units. So 2. So it is divided by 2. So 25 into 1.96 divided by 2. So answer will be 24.5. Please, if you wish, you can check the calculation. So n is equal to, so square root of n is equal to 24.5. But here we have to find out the numbers. So we have to calculate the n. Here that answer what you got is square root of n. So your answer is square root of n is equal to 24.5. So how will you calculate the n? For calculating this, we have to make the square of 24.5. So that is the reason they are taking the square of 24.5. So 24.5 square will be 600.25. So what is our answer? Our answer should be 600.25. What should be our sample size for the mean of or standard margin error of 2? So our margin error of 2 with 95% confidence, our sample number should be 600 units. So this is the answer for our question. What is the next question? Next question is reverse engineering standard deviation. It is again little bit different one. So reverse engineering the standard deviation. So a sample of 36 points, a standard of 36 items. कितने items दिए उन्होंने? 36 items. A standard of 36 items yield a standard error of rupees 5.2 for the sample mean. See, sample कितने का है? 36 items का. Sample mean का जो standard error है, that is 5.2. So what is the approximate population standard deviation? 36 आइटम का सैंपल मीन स्टैंडर्ड एरर है 5.2. तो टोटल पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? सो वी हैव टू गो फ्रॉम सैंपल टू द पॉपुलेशन. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ रिवर्स इंजीनियरिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड एरर का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड एरर? सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन. सो सिग्मा इज यहाँ क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर? स्टैंडर्ड एरर इनटू n divided by standard deviation. So again you have to rearrange this formula. So standard error is equal to sigma divided by n. So this is known as a SE. So standard error into square root of n is equal to sigma. This is rearrangement. So now we have standard error कितनी है हमारे पास? Standard error for this 36 items is 5.2 into square root of n. What is n here? I am having a sample of 36 items. So n is equal to 36. So 5.2 into square root of 36. Well, what is the figure of this? Square root of 36 is equal to 6. 36 is the square of the 6. So 5.2 into 6 is equal to 31.2. So what is my answer? 31.2 is my answer for this question. A is the correct answer. See how simple it is if you know the concept, if you know the formula. Next question. Next question is again medical trial outcome. एक तो केस स्टडी मेडिकल के बारे में हमने पहले कर दी थी. नाउ दिस इज अगेन medical trial outcome. In a clinical trial of 200 patients, 38 responded positively to a new drug. Estimate the population proportion with 95% confidence. उन्होंने क्या किया था?
200 पेशेंट को क्लिनिकल ट्रायल किया था, उसमें से 38 पेशेंट्स ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विथ 95% कॉन्फिडेंस हमें ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। तो एज यूजुअल पहले हमें कितने परसेंटेज लोगों ने उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया, हाउ विल वी फाइंड इट आउट? फर्स्टली वी विल कैलकुलेट इट एज अ पी बार। सो व्हाट इज द पी बार? 38 पॉजिटिव कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया? 38 डिवाइडेड बाय 200। सो 0.19 लोगों ने या 1.9% लोगों ने उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। सो व्हेन इट इज 19% लोग, इट इज 0.19 लोगों ने या 19% लोगों ने अगर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, इट मीन्स 81% ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया पॉजिटिवली, या 81% लोगों ने उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे दिया। सो Q इज इक्वल टू या Q बार इज इक्वल टू 1 minus P bar, that we have already discussed for quite a good number of times. So Q bar is equal to 1 minus P bar. So how will we calculate? 1 minus 0.19 is equal to 0.81. So Q bar is 0.81. Now what is my standard error? Standard error is equal to, that formula also we have seen. Standard error is equal to square root of P bar into Q bar divided by N. So the square root of, what is my P bar? My P bar is 19 into 0.81 divided by 200. Answer comes to 0.0007695 in the square root. Entire thing is in square root. So when it is in square root, what is the square of 0.0007695? It will be 0.0277. नाउ कॉन्फिडेंस लेवल एट 95% कितना है? जेड स्कोर 95% लेवल टेकन फ्रॉम टेबल से उन्होंने रेडीमेड जो हमें दिया है 1.96. सो हाउ वी हैव टू कैलकुलेट नाउ? व्हाट इज द लोअर कॉन्फिडेंस लेवल? लोअर कॉन्फिडेंस लेवल इज इक्वल टू पी बार, दैट इज 0.19 माइनस जेड into standard error. So what is my P bar? P bar is 19 minus Z is 1.96 into standard error कितना है? 0.0277. So अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे, 0.19 minus 1.96 into 0.277, which comes to 0.135. Now when I have to calculate the upper layer, I have to add this. So upper layer is 0.243. In the same way, I have to do the calculations. Only the thing here, 0.19 minus that, 0.19 plus this. So this means that we are 95% confident that the true proportion for all patients in the population, and not just this banker, who have responded positively to a new drug, lying between 13.5% to 24.3%, मीन्स 13.5% से 24.3% लोग जो टोटल पॉपुलेशन से या टोटल पेशेंट जिनका हम टेस्ट करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, उसमें से 13.5% से 24.3% तक पेशेंट उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं. दैट इज द कंक्लूजन विच वी कैन ड्रॉ. So what is my confidence level at now with 95? What is the population proportion with 95% confidence is 0.135 and 0.243. So A will be my correct answer for this question. Next question. लोन अप्रूवल पर मंथ कितने लोन अप्रूवल किए उन्होंने? कितने दिन का डाटा दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6, 6 दिन का डाटा दिया हुआ है. एक दिन उन्होंने 47 लोन अप्रूव किया, या पर मंथ 6 महीने का डाटा दिया हुआ है.
एक महीने में 47 कर दिए, दूसरे में 59, 53, 60। सो व्हाट इज द सैंपल साइज? सैंपल साइज हमारे पास 6 महीने का उन्होंने दिया हुआ है। सो स्टैंडर्ड एरर के लिए या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/n-1 into sigma of summation of sum of x माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसके लिए हमें अभी पहले x1 निकालना पड़ेगा एंड x बार निकालना पड़ेगा। अगर x1 निकालना है तो वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। सबसे पहले हमें सैंपल मीन निकालना पड़ेगा। हाउ शैल वी कैलकुलेट द सैंपल मीन? कितने सैंपल्स हैं? 47 प्लस 59 प्लस 53 प्लस 68 प्लस 61 प्लस 65। व्हाट इज द सम टोटल ऑफ ऑल these things is 343 is the sum total of all these things for the data pertaining to sample size of 6 months. So what is the sample mean or average? Average is 343 divided by 6 is equal to 57.17 is my sample mean. Normally we call it as a xi or x1 or x bar. You can say it as a x bar. So what is, how will we calculate now? Every month's data, I will deduct the sample mean. So 47 minus 57.17. So this is the minus 10.17. In the second one, we did it for 59 loan cases against the average of 57.19. So 57.17. So हमने क्या कर दिया? We did the excess work. We have sanctioned 1.83 applications more. In the same way we did it in all the months. Now we have to calculate the Q, that is x minus x bar. So 47 minus 10.17 इनका जो आ गया, so ये जो 10.17 आ गया है मेरा, we have to make the square of this. So this is not this column is nothing but the square of this column. So minus 10.17 square is equal to 103.43. You can check it. If you wish, you can check it. Please hold the line. Correct. This is the square of this column. This is nothing but the square. This is 103.43 is the square of minus 10.17. Whatever, whether it is minus or plus, square is always in it plus sign. So this is plus 1.83 square is equal to 3.35 minus 4.17 square is equal to 17.39. Like this, ये जो है, this is the 1, 2, 3, 4, 5, 6. All the 6 are squares of x minus x bar of that particular row. And अगर हम इनकी summary करेंगे, so summary of this is 260.87. So what is the standard deviation here? What is the variance here? पहले हमें variance निकालना पड़ेगा. For all the 6 months where x minus x bar is equal to 260.87. So how will we calculate? 260.87 divided by is equal to 52.17. So when 52.17 is my variance, standard deviation is equal to square root of 52.17 is equal to 7.22. So this is my answer for this question. Next question. Case study. Daily dispatch weight variation. A warehouse tracks daily dispatch weight. एक वेयरहाउस पे जो डेली डिस्पैच होता था उनका वो ट्रैकिंग रखते थे. पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12.8 kg. इट मीन जनरल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 12.8 kg. एंड ए सैंपल ऑफ 64 days shows an average dispatch weight of 328.5 kg.
लेकिन जब उन्होंने 64 डेज का चेकिंग किया सैंपल बेसिस पे, तो उनका एवरेज डिस्पैच वेट कितना आ गया, 328.5 kg। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एरर एंड कंस्ट्रक्ट इंटरवल यूजिंग द वन। उसके बाद उसमें हमें कौन सी रेंज फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द आंसर। सो व्हाट इज द फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, कि स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। सो 12.8 इज द पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइडेड बाय हाउ मच इज एन, n is for 64, 64 square root of 64 is equal to 8, 8 is 64 is the square of 8, that is the reason square root of 64 is 8. So 12.8 divided by 8, that is 1.60, is the standard error, that is sigma divided by square root of n. So sigma is nothing but the standard deviation. So standard deviation divided by square root of n is equal to standard error. ये फॉर्मूला हमें हमेशा ध्यान में रखना है. This formula will be the basic formula on the basis of which you can start your calculations. Now how will we calculate the interval? So what is the average dispatch weight of 328.5? एंड उसमें से प्लस एंड माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एरर हमें प्लस एंड माइनस करना पड़ेगा. When we want to find out the lower level, so we have to deduct it. So 328.5, which is the average dispatch weight, mean dispatch weight, minus 1.60, that is 326.90 is at lower level. And when we add it, 328.5 plus 1.60, that is 330.10, so lower level. So what is my answer? What is my 1.60? It is the standard error is 1.60. It is common in all the places. What is the range? What is the interval? 326.90, 326.90 and 330.10. So D is the correct answer for our question. अब मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है कि हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने CIB के सभी सब्जेक्ट्स जैसे ABM हो, BFM हो, ABFM हो या BRBL हो, सभी सब्जेक्ट्स के 10 मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स हमारे JIBCIBonline.com जो साइट है वहाँ आपको अवेलेबल किए, प्रोवाइड किए. All these mock test question papers are free at cost. They are available online and they are available for real time practice basis. So मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें ताकि बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जो आपको एग्जाम में आपका पेपर कंप्लीट करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है. इसी के साथ साथ सिंस दिस पेपर्स आर अवेलेबल फॉर रियल टाइम प्रैक्टिस, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे आपको आपका प्रिपेयर्डनेस भी पता चल जाएगा. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले लीजिए. इसी के साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे एंड आपके साथ साथ वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. Now let us go for next question. स्टूडेंट कम्यूट टाइम के बारे में उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दे दी है. वी हैव टू कैलकुलेट इंटरवल्स एट डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल. सो उन्होंने बताया कि व्हाट इज द मीन. मीन इज 28.4 मिनट्स. इट मीन्स एवरेज कमिट टाइम कितना है, 28.4 मिनट्स. कितने स्टूडेंट्स का उन्होंने किया हुआ है, 49 स्टूडेंट्स का उन्होंने 49 स्टूडेंट्स का उन्होंने सैंपल किया हुआ है. सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 6. अभी हमें एस्टिमेट क्या करना है, उन्होंने हमें 3 चीजें दे दी है. एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6, सैंपल साइज इज फॉर 49 स्टूडेंट एंड मीन इज 28.4 मिनट्स. अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है,
when 72 point confidence level is there and 97 point confidence level is there. When 72 point confidence level is there, Z is equal to 1.10, and in second case, Z is equal to 2.24. So in the first case, we will calculate first margin of error. How will we calculate the margin of error? 0. So सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इनिशियली वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर सो दैट वी कैन गो फॉर द margin of error. So what is the standard error here? Standard error is sigma divided by square root of n. What is the sigma here? What is the standard deviation here? 6. 6 divided by square root of n. Square root of n is equal to 49 का square root कितना है? 7. So 6 divided by 7. So what is my standard error? 0.8571. This is my standard error. So now for my interval at interval A, that is confidence level at 72.5%. What is my Z? Z is equal to 1.10. So how will I calculate the margin of error? Margin of error will be 0.8571, that is my standard error, into confidence level is equal to 0.943. For lower level, what I have to do? I have to deduct this from my means. So mean timing. So 28.4 minus 0.943 is equal to my lower level. 28.4 plus my margin of error is equal to my upper level. So what is my level? It is between 27.457 to 29.343 minutes in case of confidence where it is at 72.5%. So 27.457, it means 27.46, and 29.34 for A. This is the correct answer. Now we have to go for the interval at B at 97.5%, where Z is equal to 2.5%. So my Z is 2.24%. Now what is my margin of error? Margin of error will be Z into my standard error. So what is my standard error? Standard error is 0.857. This will be same for in both the cases. So 0.857 into 2.24, that is 1.92%. So margin of error, when my confidence is 97.5%, it is 1.92. So what I have to do? So what is my mean time? That is 28.4 plus or minus my plus or minus my margin of error when my confidence level is 97.5%. So answer will be 26.48, that is 28.4 minus 192 at lower level, and 28.4 plus 192 at upper level is 30.32. So my correct answer is for confidence level 97.5 is 26.48 and 30.32. So B is the correct answer for this question. Here A is correct, B is also correct. So correct answer for this question is B. So B is the correct answer for our question. So with this, we will conclude our discussion for a day, and I wish you all the best and thank you very much. लेकिन बिफोर दैट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, बिकॉज दैट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. इसी के साथ साथ अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा तो ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ साथ इसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे, इसका बेनिफिट ले पाएंगे. एंड आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे. सो वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच.